ठीक है, तो आज थोड़ा केस स्टडीज। ठीक है, देखिए, सो केस स्टडीज में पहला है, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको दिख रहा है? यस। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन। सबसे पहला है, यू आर एन ऑफिसर्स इन द लेबर डिपार्टमेंट, you went to your brother's wedding and saw that minors were employed by the wedding band company, ठीक है, and to carry their electric instruments. You know that it is unlawful activity and it is your responsibility to take action against it. ठीक है, मतलब आपके भाई की शादी में आप गए हो और आपने देखा कि कोई जो बैंड कंपनी वाला है वो माइनर्स को एम्प्लॉयड किया हुआ है, कहाँ पर? वो इलेक्ट्रिसिटी उठाने में। And you know that it is an unlawful activity and it is your responsibility to take action against it. However, since it is a family wedding, so they have asked you to look the they have asked you to look the other way. Some of the options available to you to handle this situation are as follows. You will not take any action as this could be seen by the others as a deliberate actions to spoil the wedding. पहला। दूसरा, you will act strictly and remove them from the wedding and file a case against the band company. And third, you will talk to the band personals and give a notice to them that they should not employ any minor children after this marriage. Full stop. Suggest any other possible options, evaluate all of them and suggest the best course of actions giving your response for it. ठीक है, सो क्या होगा, पढ़िए जरा इसको। Not take an action. Okay. Third one, you will talk to the band person and give a notice to them that they should not employ any minor children after this marriage. तो मतलब आप इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो फिर।
बस बात करने से अच्छा rather like exhibiting हम्म बिना बात के बिना बात कैसे भाई, वो क्राइम कर रहा है, वो किसी माइनर को बाहर मतलब एम्प्लॉय कर रहा है और वो गलत है। नोट मतलब आप आपके सामने गलत काम होते हुए देख रहे हो और फिर नोटिस दोगे उसको? नोटिस तब दिया था ना जब वो अनजाने में कर रहा है। शादी फंक्शन वगैरह चल रहा है वो भी हम करना हाँ हाँ और उसी के दौरान हाँ हाँ दिस इज रॉन्ग एंड देन फिर वो देखेगा नहीं भाई आप ये आप मतलब कि आप आपके सामने मतलब उस फिर बच्चे का क्या होगा, उसके तो राइट्स वायलेट हो रही है, उसको तो एम्प्लॉय किया जा रहा है, माइनर है और वो काम भी कर रहा है अभी। अगर लेना भी हो तो शादी के बाद शादी के बाद होगा लेकिन हाँ एट दैट मोमेंट ताकि मतलब फंक्शन खराब ना हो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम जस्ट उनको समझा करके ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोक फिलहाल तो नहीं रोके और बाद में अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी पड़े हाँ तो शादी के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। चलिए ये तो खैर एक मतलब बेसिकली लगेगा कि हाँ यही सही ऑप्शन है, बट ये जो एक्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप आपके सामने कोई क्राइम होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है? अगर क्राइम होते हुए देख रहे हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। एक सिविल सर्वेंट्स का होता है ये, क्योंकि मान लो फिर तो ठीक है ना, तो फिर तो वही करेगा कि जो मतलब ऑफिसर्स है उनके यहाँ एम्प्लॉय करेगा तो उसके यहाँ वो वैसे बच्चों को मतलब मेजर को ले जाएगा और ऐसे फिर लोगों के पास माइनर को ही ले जाएगा वो। ये भी एक हो सकता है। देखो पहला वाला क्वेश्चन, यू विल नॉट टेक एनी एक्शंस, ये क्या होगा, ये इम्पैथी हो जाएगा, मतलब सॉरी एपैथी हो जाएगा। हाँ और आप एक रॉन्ग चीज को प्रमोट कर रहे हो, ये भी ये गलत है। वर्क एथिक्स भी जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा और क्योंकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा, यू विल एक्ट स्ट्रिक्टली एंड रिमूव देम फ्रॉम द वेडिंग एंड फाइल ए केस अगेंस्ट द बैंड कंपनी। ठीक है, देखो ये जो पोर्शंस है इसके बारे में बाद में आएंगे, बट यू विल टेक टू द बैंड कंपनी पर्सनल एंड गिव ए नोटिस टू देम दैट दे शुड नॉट एम्प्लॉय एनी माइनर चाइल्ड आफ्टर दिस मैरिज। नहीं, आफ्टर क्यों, वो क्राइम तो हो रहा है वहां पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू शुड स्टॉप दैट क्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है? तो थर्ड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है, बचा सेकंड वाला ऑप्शन, यू विल एक्ट स्ट्रिक्टली एंड रिमूव देम फ्रॉम द वेडिंग एंड फाइल ए केस अगेंस्ट द बैंड कंपनी। देखो ये ऑप्शंस बहुत हद तक सही है। कहने का मतलब ये है कि केस तो उनके ऊपर बनता है क्योंकि दे हैव एम्प्लॉयड ए माइनर, ठीक है? तो माइनर को एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। प्लस इफ रिक्वायर्ड आप अपने घर वालों को समझाओ कि ये जो चीजें ये कर रहा है ये गलत है एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ। और दूसरा ये कि क्योंकि वो माइनर को एम्प्लॉयड किया, इसके चार्जेबल है ना, ऑफेंसिबल फाइन भी लगता है इसमें, ठीक है? तो वो आप अलाउ नहीं कर सकते, और क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, यू आर द सेल्फ विटनेस, तो हाउ यू कैन अलाउ इट, तो उसको हटाना जरूरी है। एंड हो सके तो अरेंज सम अदर बैंड कंपनी, ठीक है? यू हैव देयर सोर्सेस, यू कैन अरेंज सम अदर बैंड कंपनी जो उस चीज को हैंडल करे, ठीक है? एटलीस्ट उसको हटाओ, प्लस वो बच्चे को हटाना पड़ेगा एंड केस शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट दैट कंपनी। होगा तो घर वालों को समझाना ही पड़ेगा कि नहीं इस तरह की जो चीजें है वो गलत है, ठीक है? इट इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है? तो लॉ के चलते आप दूसरे पब्लिक कन्वीनियंस मतलब कन्वीनियंस को देख के आप लॉ को वायलेट करते हुए नहीं देख सकते, ठीक है? दैट इज द केसेस। लिख लीजिए ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, this actions, yeah, these options is not acceptable, this action is not acceptable as it is going to violate, it is going to violate the work ethics, the work ethics
as well as it will also show apathy. It will also show apathy towards the it will also show apathy towards the work. ठीक है, full stop. However, the action done by the band company is illegal, and it need to be reported, and booked, Next, third option is also not acceptable, as by seeing the crime, or by witnessing the crime, the crime should not be allowed to happen. The crime should not be allowed, or the criminal should not be allowed. The crime or the criminal should not be allowed to go ahead with the criminal activities. ठीक है, full stop. However, option 2 is more feasible. And I will take the or follow the second options. ठीक है, if required, I will try to make understand. To my family members and ask them you are just following your duty. You are just following your duties. And being a civil servant, you cannot allow these things to happen. And being a civil servant, you cannot allow these things to be happen. ठीक है, समझ में? Next, if possible, a new band company should be arranged immediately.
new band company should be arranged, possibly should be arranged. ठीक है, so that the function should happen, in a proper way. In a proper way. ठीक है समझे? चलिए, तो ये क्या था, दूसरा सेगमेंट से। हाँ, थोड़ा ये लग रहा होगा आप लोग के अजीब, क्यों उसको बेकार का ऐसा किया, बट ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप क्राइम को होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। अगर क्राइम हो रहा है तो हाउ कैन अलाउ इट टू हैपन, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए दूसरा क्या है, यू आर पोस्टेड एज अ डीएम इन अ डिस्ट्रिक्ट, यू आर पोस्टेड एज अ डीएम इन डिस्ट्रिक्ट, as a DM in district, you came to know that a newly appointed BDO is making commission from development activities being carried out. Before taking action, you plan to do some background check and come to know that the BDO is from a very humble background and his relations are dependent on humble background and his relations are dependent on him. Moreover, he is funding the education of their children. You also came to know that this video is pro-poor and has implemented all BPL scheme with efficiency wherever posted. Keeping this fact in mind, what would be your course of actions? Okay. You are posted as a DM in a district. You came to know that a newly appointed BDO is making commission from developmental activities being carried out. Before taking action, you plan to do some background check and came to know that this BDO is from a very humble background and his relations are dependent on him. Moreover, he is funding the education of their children, and you also came to know that this video is pro-poor and has implemented all BPL schemes with efficiency. But wherever posted, keeping this fact in mind, what would be your course of actions? सिंपल है, क्या करना होगा? जो बच्चा ऑनलाइन है, नहीं खुद क्यों अवेल करेगा, लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड एंड इंस्टीट्यूशन, हाँ इम्प्लीमेंट करता दूसरे जगह, मतलब जो भी बीपीएल स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करता अच्छे से, बट वो कुछ कमीशंस पे काम कर रहा है, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसको कमीशन ले रहा है। सो अलाउ करेंगे, चलिए ठीक है। और ओके, और नेक्स्ट, मतलब वो तो ठीक है, उसका एक्शन लेना, अब करा क्या जाएगा? देखो उसके जितने भी हम्बल बैकग्राउंड है या जो भी उसने किए हैं दूसरे लोगों के लिए या जो भी उसके रिलेशनशिप, इट डजंट मैटर इफ ही हैज डन रॉन्ग क्राइम, और क्योंकि एक कमीशंस पे काम कराना ये एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटीज है, सो इट शुड नॉट बी अलाउड इन एनी केस फर्स्ट ऑफ ऑल। हेंस
दैट वीडियो शुड बी बुक टू चार्जेस। ठीक है, उसके जो जितने भी अदर जो चीजें बीइंग उसने इंप्लीमेंट किया सारे बीपीएल स्कीम्स वगैरह, वो उसका ड्यूटी था, यू हैव टू डू इट। बट उस अपने ड्यूटी में ही उसने करप्ट एक्टिविटीज भी किया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसके जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है गवर्नमेंट उसको इसीलिए रखी है कि सारा वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करवाए। तो वो तो अपना ड्यूटीज कर रहा था, वो तो उसका लायबल था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड था। बट बात रही उसने जो गलत जो कमीशन का काम किया वो तो गलत काम है, एंड ही शुड बी बुक टू द चार्जेस। क्लियर है, ये तो समझ में बड़ा सिंपल है। चलो नेक्स्ट, थर्ड जो है ऑनर किलिंग हैज बीन इन न्यूज इन रिसेंट टाइम्स। अच्छा लिख लो इसको, सेकंड वाला ऑप्शन लिखो। दो द वीडियो has implemented all the BPL schemes, all the BPL schemes and other activities or other developmental activities, and these are the constitutionally obligated work which he need to perform, which he need to perform however taking of commissions is bad. However, taking of commission is bad, and he has violated is bad, and he has violated the norms, and he has violated the norms, and he need to be booked, and further investigation need to be done, booked, 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 and further investigation need to be done in order to justify the order to justify in order to get the clear understanding of his activities. ठीक है, and if he found guilty he should be booked according to the law. And he should be removed from, until then he should be removed from any developmental activities
until he should be removed from any developmental activities. ठीक है, समझ में? तो ये कुछ था उसके प्रोविजंस वगैरह. नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड. Honor killing has been in news in recent times. It involves the homicide of a member of a family by other members due to the perpetrators believe that the victim has brought shame and dishonor upon the family. Analyze this problem in detail and indicate not only the social but also the emotional and attitudinal factors responsible for this problem. Also distinctly bring out why number one, the youth in such area do not speak up against these practices. The convictions rate in honor killing cases is extremely low, and women who have to face the brunt of this crime the most do not speak against it collectively. Discuss some feasible steps which would be effective in controlling this serious problem. ठीक है, तो टॉपिक तो मालूम ही है और बड़ा सिंपल है. नॉट ओनली द सोशल बट आल्सो द इमोशनल एटीट्यूडनल फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑनर किलिंग हैज बीन इन न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स. इट इन्वॉल्व्स द होमिसाइड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली बाय अदर मेंबर्स ड्यू टू द परपेट्रेटर्स बिलीव दैट द विक्टिम हैज ब्रॉट शेम ऑन द डिसऑनर अपॉन द फैमिली. सबसे पहला क्वेश्चन है एनालाइज दिस प्रॉब्लम इन डिटेल एंड इंडिकेट नॉट ओनली द सोशल बट आल्सो द इमोशनल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम्स. आंसर कैसे होगा? एनालाइज दिस प्रॉब्लम इन डिटेल्स. क्या करोगे पहले? सोशल फैक्टर तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पहला वाला डाल रहा है कि एनालाइज द फैक्टर्स. जस्ट होल्ड ऑन. Analyze this problem in detail and indicate not only the social but also the emotional and attitudinal factors. Social, फिर आपका social but emotional and attitudinal factors. Social factor, emotional factors, attitudinal factors. Point point करके आंसर राइटिंग में यही होगा. सोशल फैक्टर्स, एटीट्यूडनल फैक्टर्स. ऑनर किलिंग पहले सब इंट्रोडक्शंस दोगे. कितना? 2 से 3 लाइन का या 4 से 5 मैक्सिमम होना चाहिए. तो यू कैन मतलब मैक्सिमम 5, बट इसका मतलब ये नहीं कि 5 तक लिखना जरूरी ही है. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 लाइन ऑल्सो और इट कैन बी 4 लाइन ऑल्सो. इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन किसका दोगे? ऑनर किलिंग का. व्हाट इज ऑनर किलिंग? बस क्या होता है ऑनर किलिंग? डायरेक्ट टू द पॉइंट. व्हाट इज ऑनर किलिंग? इंग्लिश में बताइए क्या लिखोगे स्टेटमेंट. लिखो जरा आपने थोड़ा इसका आंसर. हाँ, इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का, उसके बाद उसका फैक्टर्स. डायरेक्ट टू द पॉइंट, उससे ऊपर ज्यादा नहीं.
पांच लाइन से ज्यादा नहीं. इंट्रोडक्शन शुड बी लेस देन 4 to 5 लाइन्स, मोर नॉट मोर देन दैट. इसका अगर आप 4 लाइन से ज्यादा लिख रहे हो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग द, मतलब यू आर गिविंग मोर लेस इंपॉर्टेंस टू द बॉडी. तो स्पेस छोड़ के थोड़ा सा देखो, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, आप ध्यान रखना जस्ट इतना, फिर उसके बाद वो जो दूसरा स्टेटमेंट बॉडी चालू करोगे, इट शुड बी फ्रॉम हियर. लाइक अगर मान लो यहाँ से आप लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन आपने लिखा है, तो उसके बाद थोड़ा स्पेस है, यहाँ से थोड़ा जगह इधर साइड में थोड़ा जगह छोड़िए, और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करो. हाँ, बॉडी.
वर्ड लिमिट मेंटेन करना, इतना भी नहीं लिख देना। हो गया, चलिए बताइए एक एक करके। Analyze this problem in detail, indicate not only the social but also the emotional and educational factor. What are the social factors? Caste system मतलब क्या कर रहा है कास्ट सिस्टम में? मतलब स्ट्रिक्ट रिजिड कास्ट सिस्टम है, ठीक है। और फेम मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो किसी दूसरे कम्युनिटी में अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, शादी वगैरह या बेसिकली शादी का ही केस होता है, तो ही गॉट। हाँ, चलिए, तो एक तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा इमोशनल फैक्टर्स क्या है? सोशल बोल रहा है ना। व्हाट आर द इमोशनल फैक्टर्स? इट ब्रिंग व्हाट? एंगर, anger upon the person who has committed the perpetrations. And attitudinal factors, it shows that females are more down, ठीक है। नॉट ओनली दिस, कभी कभी ये मेल का भी होता है, ऐसा नहीं है फीमेल का ही होता है, मेल का भी होता है, दोनों दोनों का ही हो सकता है। फीमेल ज्यादा सही, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है द यूथ इन सच ए डू नॉट स्पीक अप अगेंस्ट दिस प्रैक्टिसेस। व्हाई? because they silently accept this what activities, क्योंकि अगर इस एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो दे शुड स्पीक अप, बट वो हाँ, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेड चीज है, हाँ एक्सेप्टेड सिखाई जाती होगी, हाँ ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है, चलिए दूसरा क्या है? The conviction rate in honor killing cases is extremely low. Why extremely low? These cases are not reported. रिपोर्ट नहीं होता, अगर रिपोर्ट होता भी है तो कोई एविडेंस नहीं आता ड्यू टू द एविडेंस सिस्टम। ना वो तो है ही है, मतलब कोई रिपोर्ट ही नहीं करता ना, राजी नहीं होता, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेड चीजें हैं तो इसलिए गवाही भी कोई नहीं देता। एंड थर्ड, हाँ खाप पंचायत वगैरह ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट है वुमेन हु हैव टू फेस द बर्nt ऑफ दिस क्राइम द मोस्ट डू नॉट स्पीक अगेंस्ट इट कलेक्टिवली। व्हाई दे डोंट स्पीक इट कलेक्टिवली? क्योंकि उनको सोशली इंफीरियर करके रखा गया है, और दे आर मोस्टली क्या होता है डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट, ठीक है। ये भी एक तरह का चीज है। लास्ट, डिस्कस सम फिजिबल स्टेप व्हिच कुड बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग दिस सीरियस प्रॉब्लम। कुछ फिजिबल स्टेप बताइए जिससे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले सोशल अवेयरनेस की डिस्क्रिमिनेशन, यस एक तो ये। दूसरा खाप पंचायत जैसी चीजों को नहीं, बैन तो अलग बात है, बट एटलीस्ट इसको अवेयर किया जा सकता है। रिलीजियस लीडर या हेड ऑफ द विलेज मैन, उनसे बात डिस्कस करो, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शंस लॉ को भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको स्ट्रिक्ट करके आप सही से, मतलब इस तरह के केसेस को अलग एक बकायदा एनोनिमस भी रखो आप, कि जो भी आपका रिपोर्ट कर रहा है उसको, मतलब जो विटनेस वगैरह या जब जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रहा है बेसिक पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और जो इनको भी लाइक ताकि वो एम्पावर्ड रहे, और कि पति ने छोड़ दिया तो क्या, यस, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्कीम्स वगैरह चालू करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है समझ में। तो ये दूसरा, नेक्स्ट फोर्थ, लिखिए। नेक्स्ट है गजेंद्र वंश ए स्ट्रगलिंग फिल्म एक्टर वाज एक्यूज्ड एंड लेटर एक्सोनरेटेड फॉर ऑफ रेप charges which the jury found to be motivated and fake. Not able to cope up with the situations, he changed profession and moved on. 30 years later, while his closest friend know about the incident but his co-worker do not, one day out of curiosity he searched for his name on the internet and to his surprise find the third entry that came up is an old report in a local newspaper about the rape charges he faced. Gajendra is upset. After all these years, we would like to be able to disclose the event only to whomever he want. He has heard about the decision of European Court of Justice, which allow individual to submit requests to a search engine to remove certain results from the searches on their name and citing the same
request the search engine and media outlet to remove the results. Valid argument can be advanced for making the right to be forgotten a fundamental rights. What those argument could be? What limitations, if any, can it be subjected to? Should there be an obligations on the search engine regarding the cases which are no longer relevant as the one mentioned above? ठीक है, ये क्या है? राइट टू फॉरगेट वाला मसला. ठीक है, तो सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है. सबसे पहला ये है कि गजेंद्र इज अपसेट. ये केस तो मालूम चल गया, केस क्या है. Gajendra is upset after all these years. He would like to be able to disclose the event only to those whom he want. He has heard about the decision of European Court of Justice which allow individual to submit requests to a search engine to remove certain request results from the searches on their names and citing the same. Request the search engine and media outlet to remove the results. Valid argument can be advanced for making the right to forgotten a fundamental rights. What those arguments could be? कौन कौन सा argument हो सकता है? Right to be forgotten. देखो, सबसे पहला ये पूरी तरह से एक सही आर्गुमेंट है. कहने का मतलब ये है कि अगर इन पास्ट अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है, कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगते रहते हैं सोशल मीडिया के चलते, होता क्या है कि कोर्ट और जस्टिस मतलब वोट और लॉ अपना डिसीजन दे उससे पहले लोग पहले अपना डिसीजन दे देते हैं. सोशल मीडिया के होने के चलते होता क्या है कि लोगों का जो एक डिफेमेशंस, जो मतलब एक तरह का जो उनके नाम को खराब करना, क्राइम उसने किया है नहीं किया है और फॉल्स एलिगेशंस भी लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा सकता. एक बार मतलब एलिगेशंस लग गया तो वो चीजें मीडिया में हमेशा इम्प्रिंट रहती है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वो रहेगा ही, इंटरनेट पे रहता ही है. और उसको मतलब अगर उसको मुक्त करना मतलब बरी होने के बाद भी अगर आदमी वो मतलब प्रूवन इनोसेंट भी होता है, इनोसेंट भी प्रूव हुआ था, फिर भी वो उसके ऊपर में जो एलिगेशंस वाला कंटेंट है वो ऑलरेडी मीडिया में रहता है. तो इसको भी हटाना ये जरूरी है. एंड राइट टू फॉरगेटन इज ए वैलिड मतलब इज ए वैलिड फंडामेंटल राइट्स जो होना चाहिए लोगों के ऊपर, क्योंकि इससे होता क्या है कि आदमी अपनी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रहती है और ऐसी चीजें ना मीडिया में आए या ना पुराना रहे जो एक्चुअली वो फॉल्स एलिगेशंस. डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी था, वो तो है ही है, प्लस ये भी जरूरी है राइट टू बी फॉरगेटन वाला. हाँ 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 हाँ, आराम से कर सकते हो उसको. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. दूसरा, व्हाट लिमिटेशन इफ एनी कैन बी सब्जेक्टेड टू? शुड देयर बी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द सर्च इंजन रिगार्डिंग केसेस which are no longer relevant as the one mentioned above? Yes, there should be obligations on the search engine also. They should be obliged not to put those things which are already removed, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो false है, तो उसको हटाना सर्च इंजन के लिए ऑब्लिगेशन करना चाहिए. यस, हाँ, ये हटाना चाहिए, रेलिवेंट है और हाँ जरूरी जो. ठीक है, तो दिस थिंग शुड बी देयर, तो ये जरूरी भी है. समझ में आया? ये केस इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ. ठीक है, इसमें तो हो जाएगा, लिख लोगे क्या है. नेक्स्ट, फिफ्थ. You are posted in a district as a public servant responsible for looking into the matters of violation of Right to Education Act. You came across a case in which a poor farmer had beaten his daughter for not going to take her 5th class annual exam. Okay? Eventually, he tied her up with his motorbike and took her to the examination hall. Corporal punishment to the children by parents or teachers is a punishable offence with 3 months jail term. Okay? When he inquired about it, the poor farmer explained that he had done so for ensuring a better future for her daughter, as he does not want his children to live in a poverty in which he is living. He also said that his economic condition is poor, and if he is taken to jail, his children will face severe hardship. Okay? What are the options available to you? क्या उसके पिता ने क्राइम किया है, ठीक है, क्योंकि उसने मारा, कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया और एक तरह का एक क्राइम भी है. हाँ 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 हाँ, आइडिया नहीं है कि पेरेंट्स कितना क्या कर रहे हैं. तो मतलब इतना करना तो ज्यादा ही हो गया. हाँ, तो क्या मतलब क्या करना चाहिए उसको?
फादर को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। फादर को पनिशमेंट मिलना चाहिए। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू? जी है। वो अकेली बच्ची है। आप देखो, ही इज अ सिंगल फादर। पर बच्ची को हाँ, NGO मतलब उसके पिताजी हैं भाई, और एनजीओ में डाल दोगे? 6 months के जेल में डाल दो और तब तक 6 मंथ्स के लिए एनजीओ में डाल दो, है ना। और उसके बाद उसके पापा जब जेल में आएंगे तो बच्ची रहेगी ही नहीं। इसको बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो केसेस में। आपको क्या करना है? आपको लॉ जो कह रहा है उसको करना है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो करना ही है। सिंगल पेरेंट नहीं, मतलब वो बोल रहा है ना कि posted district public servant responsible for matter of violation of right to education act. You came across a case in which a poor farmer had beaten his daughter for not going to take her 5th class annual exam. वो अपना एनुअल एग्जाम लेने नहीं गई थी, इसलिए उसको मारा। हाँ, नहीं गई। हाँ, इवेंचुअली ही टाइड अप विद द मोटर बाइक एंड टुक हर टू द एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाया। Corporal punishment to the children by parents or teachers is a punishable offense. When you inquire about the poor family, farmers explained that he had done so far ensuring. मतलब देखो, वो अपने फार्मर जो था वो अपना उसका जो मोटिव था वो सही था, मोटिव सही था, वे गलत था। ठीक है, तो वे गलत था तो उसके लिए उसको लॉ में जेल के अंदर में नहीं डाल सकते हम। सिंपल सा चीज पहला, तो वी कांट पुट दैट फार्मर्स इनटू द जेल, क्योंकि अगर उसको जेल में डाल देते हैं तो अभी तो उसके बच्चे का जो फ्यूचर है वो लगभग खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। और उसका मोटिव ये है कि वो नहीं चाहते कि वो जो गरीब है वो उसके बच्चे भी गरीब रहे, और वो इस तरह से मेहनत करके वो उसको पढ़ाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसके उसके चीजों का भी देखना पड़ेगा, प्लस इसको छोड़ भी नहीं सकते ऐसे। तो क्या करना होगा, उसके फादर को स्ट्रिक्ट आपको वार्निंग देना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट वार्निंग और नोटिस कि अगली बार से ऐसा करोगे तो फिर जेल में डाल देंगे, पहला। और दूसरा, उस बच्चे को भी समझाना पड़ेगा कि आपको एजुकेशन में एग्जाम देना जरूरी है, और यही बताना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स इस इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका गलती नहीं है। तो यहाँ पर आपको हाँ रेगुलर विजिट रखना पड़ेगा। वो सब तो एडेड चीजें हैं जो आप डाल सकते हो, बट मेन मोटिव है कि अगर उसके फादर को जेल में डाल दिया तो फिर उसकी पढ़ाई ऐसी हैम्पर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एनजीओ में जाके वो उस तरह से चीजें होगा ही, और पेरेंट्स ऑलरेडी है। काउंसलर तो वो है ही है, फादर को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया ना बीच बीच में जाके। एनजीओ कब जरूरत पड़ता है? जब उसका और कोई मोटिव और तरीका ना हो। ठीक है, अब इसमें किसी दूसरे का देखो, फादर वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ उसको जानबूझ के मार रहे हैं, ऐसी बेमतलब की बातों के लिए मार रहे हैं, और उसको मार रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो होता है तुम्हारा पढ़ने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि वो जानबूझ के ऐसे बार बार बात बात में मार रहे थे, नहीं, पढ़ने के लिए मारे हैं। तो फादर को भी समझाना पड़ेगा और संग संग उस बच्चे को भी समझाना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्क। ठीक है ना, दैट इज द केस। ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा आपका दिस वन। नेक्स्ट ऑप्शन 6, उसको देख लेते हैं। You are an undergraduate student in a leading law university. You go with your college friends Surinder to his village to attend his sister marriage. Surinder's parents are farmers and are financially very poor. They have somehow managed to send him to the university by selling their land. After interaction with the family relative attending the marriage, you found out that the bride is not of marriageable age. ठीक है, which make it a case of child marriage. Full stop. The family wants early child marriage. The family wants early marriage of the children daughter to avoid huge demand of dowry in the future. ठीक है, you are well aware that the child marriage is illegal in India, so you discuss the issue with your friend, who say that he is helpless and can't do anything. Your friends feel that his family is already doing too much for him, and he cannot argue and change his parents' decisions. In this situation, what are the possible actions you can take? Evaluate the merits and demerits of each one. क्या होगा इसका?
ऐसे कर सकते हैं वो कि उसकी लीगल एज हम्म तब शादी। हाँ लीगल एज तक कैसे? मतलब लड़की की पेरेंट्स को जाकर बोलना है कि आपकी बेटी के साथ में शादी होगा, हाँ लेकिन वो उसका एज नहीं नहीं समझे नहीं, वो बात है कि वो उसके सिस्टर की मैरिज है, उसके दोस्त की मैरिज नहीं है, सिस्टर की मैरिज है किसी और से, और उसकी सिस्टर माइनर है। तो उसकी पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि जब उसकी एज होगा तब भी उस लड़के के साथ में शादी करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो भी नियम कानून से उसको थोड़ा बहुत सही करें। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि बाद में हो सकता है दहेज बढ़ जाए। उस लड़के के फैमिली के साथ वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी क्या करना है? In this situation, what are the possible action you can take? Evaluate the merits and demerits of each of them. देखो इसमें है क्या, उसका जो फ्रेंड है वो हेल्पलेस है। क्यों हेल्पलेस है? देखिए वहां पर लिखा हुआ है, so that helpless and cannot do anything. Your friend feels that his family is already doing too much for him and he cannot argue and change his parents' decisions. वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, तो वो हेल्पलेस है। ये तो हेल्पलेस नहीं है, आप हेल्पलेस नहीं हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस। पुलिस को रिपोर्ट करोगे, और पहले तो उस पुलिस को रिपोर्ट करने से पहले अपने उस पेरेंट को समझाओगे कि ये जो आप कर रहे हो ये क्राइम है, और अगर ये चीजें बाहर आई तो ये आपको जेल भी हो सकता है। पहले उनको समझाओगे कि ये जो चीजें हैं वो गलत है, और आप इस डाउरी के चलते अपनी बच्ची को माइनर एज में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते हैं देन यू कैन अप्रोच टू द पुलिस। पुलिस के पास जाना पड़ेगा और ये चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बीइंग ए सिंसियर सिटीजन यू हैव टू रिपोर्ट ऑल द क्राइम्स व्हिच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, इसके चलते आपके उसके फ्रेंड्स को भी समझाना पड़ेगा कि ये जरूरी है, क्योंकि वो हेल्पलेस है और हो सकता है उसके सिस्टर के फ्यूचर भी डेंजर में आ जाए। तो अगर वो पढ़ाई करती है तो उसके लिए हो सकता है बात के बारे में तो कोई नहीं सोच सकता ना कि पहले से ही वो मतलब डाउरी का सिस्टम इस तरह का रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि उसके फ्रेंड को समझाना पड़ेगा कि अपने सिस्टर को पढ़ाई करने दो पहले, और जब उसकी लीगल एज हो जाए शादी की देन शादी देना सही है, उससे पहले नहीं। ठीक है, दैट इज द केस। इसमें उसके पेरेंट को और भी चीजें समझानी पड़ेगी। उसे एजुकेशन के लिए बताना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है गर्ल चाइल्ड के लिए। पैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे, स्टेट गवर्नमेंट ने बकायदा ये भी कराया कि लड़की के डाउरी के लिए कुछ पैसे वगैरह भी बाद में मिलते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट्स। तो वो सब स्कीम्स के बारे में बताओ, ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो। प्लस हाँ 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 1 लाख हाँ वैसे करके है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम चलाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो उसको उनको बताओ कि ये सब चीजें हैं। यस, तो इसमें जब आप लिखोगे तो उसमें स्कीम्स, जो स्कीम्स होगा उसको कैपिटलाइज करो, उसको लिखो कि ये सब स्कीम्स वगैरह है। ठीक है, समझ में? तो ये भी बड़ा सिंपल सही है। चलिए नेक्स्ट 7th आते हैं। As the administrator in charge of your area, you are witness to the widespread food wastage in lavish parties as well as restaurants. ठीक है, as well as restaurants and eateries. On one hand, on one hand, and people starving due to inability to ensure 1 square meal a day. On the other, realizing that it is not the scarcity of resources but the habit of people that is causing paucity in availability of food. You decide that certain measures are needed to be taken in order to deal with the issue of starvations at the grassroots level. ठीक है, given the situation, answer the following. Identify the ethical issues involved in this case. What measures would you take to deal with the wastage of food in your areas? And C, what explains this coexistence of affluence and hunger in developing countries like India? Identify the ethical issues involved in this case. हाँ जो बच्चा ऑनलाइन है इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़िए, पढ़ के बताइए।
ये आराम से सोचिए, थोड़ा है टेक्निकल है ये। क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें? जब एथिकल इश्यूज के बारे में पूछते हैं तो सिर्फ मतलब हाँ, उस केस से रिलेटेड, हाँ, जो एथिकल इश्यूज हैं, स्टेटमेंट का लिखना ऑब्वियसली बात। एक बार ट्राई कीजिए, लिखिए जरा, लिखो सोच सोच के। हर बार हम बता देते हैं, इस पर लिखिए आप क्या क्या है। एथिकल इश्यूज एक तो फूड से रिलेटेड हो गया, दूसरे जो अमीर हैं उनका एक तरह से मतलब इग्नोरेंस टुवर्ड्स द लोअर क्लास ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप यहाँ पर खाना फेंक रहे हो और उधर में किसी को खाना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये भी एक तरह का एथिकल इश्यूज है। वायलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, लाइक जस्टिस, लाइक फेयरनेस, ये भी वायलेट हो रहा है। इक्वालिटी मतलब खाना अगर उनको मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। एथिकल इश्यूज हाँ, एथिकल इश्यू, इसका लाइन से लिखिए क्या क्या है। सबसे पहला, ये बस फ्रेमिंग बता रहे हैं उसको, लिखो दिस केस involves a this case involves a various ethical issues which has been arisen due to the contrast of the society, due to the contrast माने difference, contrast of the society in a developing country, attitudes of people
and dilemma, attitudes of people and dilemma to act or not to act, to act or not to act. Attitude of people and dilemma to act or not to act for the officers. मतलब इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि आपको एक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब खाना अपना पैसा है, वेस्ट करें। तो बीइंग ए ऑफिसर्स आपको उसमें आपको करना इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी एक है। दूसरा, अब इसी का लिख लो डायलेमा थोड़ा सा क्या क्या। द केस कैप्चर्स द केस कैप्चर्स, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये आंसर होगा आपका। द केस कैप्चर्स द ironic situations, the case capture the ironic situations where the affluent माने जो rich family, where the affluent have enough food to waste, whereas the poor are barely able to meet their daily requirement, whereas the poor are barely able to meet their daily requirement, Full stop. The basic ethical issues involved here is lack of cognizance of the inequalities, of inequality that exist in the society, full stop. This in turn include various aspects, that is lack of compassion, and sensitivity, on the part of people wasting food at the individual as well as the community level, ठीक है पहला। दूसरा, lack of foresight and rationality, next, violation of principles of equality, comma justice, comma fairness due to the widespread inequalities, next, lack of responsibilities, for actions, on part of the affluent,
Next, undermining the value of social equality, undermining the value of social equality and dignity of all, social equality and dignity of all. ठीक है, clear है? Next, an individual exercises various rights over an individual exercises various rights over something that he or she has paid for, in many cases even a right to destroy it, in many cases even a right to destroy it, that is, do as it please, full stop. But food wastage does not fall into that realm. Fall into that realm, REALM, realm. मतलब जैसे पानी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये नहीं है कि ये सब खाना हो गया, ये ऐसा चीज नहीं है जो आपने पैसा दिए तो आप उसको जो चाहो वैसे वेस्ट करो, ऐसा कुछ करके आप अपना इंजॉयमेंट के लिए दूसरे की लाइफ स्टेक में नहीं डाल सकते। ये भी एक तरह का है। बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज होते हैं, बट ये कमोडिटीज वैसी नहीं है जिसको आप वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, फूड इज राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, फूड इज राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, it is not a commodity, that can be acquired and wasted. It is not a commodity that can be acquired and wasted for one's pleasure, at the cost of, someone else's life, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, as the administrator in charge of my area, my action to deal with wastage of food, and to address hunger, at grassroots level, would be both short term and long term, and would include
and would include number 1, as an immediate step, I would ensure that, as an immediate step, I would ensure that adequate quantity of food, resources is available, adequate quantity of food resources is available in my district to meet the basic requirement of people, who are unable to meet their daily minimum food intake, who are unable to meet their daily minimum food intake, who are unable to meet their daily minimum food intake. डेली मिनिमम फूड इनटेक मतलब जो दिन का पूरा खाना मतलब उनको नहीं मिल पा रहा, तो मैं इंश्योर करूंगा कि उनको मिले ये चीज. सेकंड, in order to address the issue of wastage, I will undertake the following measures. Like number one, I will introduce a system of analytical assessment. Of food requirement for functions and programs in public gathering and with consent of people, I will introduce it in private program as well. तो स्टॉप. ये पहला एक सिस्टम तरह से डालेंगे. दूसरा, contacting local NGO working in food provisioning to poor and encourage them to recruit such affluent people, ठीक है, समझ में आया? मतलब इस तरह के एनजीओस को हम अप्रोच करेंगे जो फूड प्रोविजनिंग में काम करते हैं. ऐसा होता भी है बहुत जगह, देखोगे कि अगर शादियों में इस तरह के फंक्शंस में जो खाना ज्यादा बचता है, ऐसे बहुत सारे एनजीओस होते हैं जो आके ले जाते हैं. तो उन सब एनजीओस में उनको इंकरेज किया जाएगा, भैया कुछ एफ्लुएंट बड़े लोगों को भी आप ज्वाइन कराओ. और इससे होगा कि बड़े लोग जब ज्वाइन होंगे तो वो अपने एरिया या शादियों में जो उनके जो जान पहचान में होते हैं उनको इस तरह से प्रमोट करेंगे कि भाई खाना वेस्टेज ना करो. पहला. सेकंड,
where warning works, measures such as penalties, where warning works, measure such as penalties on the organizers can also be considered after doing a feasible study. Next, public awareness campaign can be started to make people aware about the wastage of food, Next, cooperations from hotels and restaurants should be sought SOUGST sought, and they can be persuaded to display images which curb wasteful behavior, ठीक है. Next, children often act as agent of change in the society. ये तो क्लियर, बच्चों के थ्रू अवेयरनेस फैलाया जा सकता है. एजेंट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. They can be roped in, roped in through awareness campaign. In schools slash colleges full stop. Establishing linkage system to create a pool of leftover food which can be distributed. Linkages system to create a pool of leftover food which can be distributed among the needy. For this, I would also approach the private sector to pitch in through CSR, and other means.
and other means. Full stop. Already certain projects of a similar nature are functioning. Already certain projects of a similar nature are functioning. Already certain projects of a similar nature are functioning in different parts of India. For example, Roti Bank, Roti Bank, comma, Feeding India Initiative, Feeding India Initiative, Feeding India Initiative, Operation Sulaimani, Operation Sulaimani, etc. Next, creating efficient storage system, creating efficient storage system for preservation of food items, for preservation of food items that can be distributed later. Food items that can be distributed later. ठीक है? Next, emphasizing on buffet system, emphasizing on buffet system in hotel and eateries, emphasizing buffet system in hotels and eateries to reduce wastage of food, to reduce wastage of food. ठीक है, समझ में? तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको लिखना होगा। तो वो भी मिला और ये भी मिला। लास्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What explains this coexistence of affluence and hunger in developing countries like India? So you have to put answer. Reasons for coexistence of affluence and hunger in developing countries in India. क्या होगा रीजन? माने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ पीपल्स। तो पहले लिखो, देखिए सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये तो यू कैन कोट दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो पहला लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, concentration of resources in few hands. Next, दूसरा, inability of a state to provide, inability of the state to provide robust security nets, inability of the state to provide robust security nets and welfare scheme, robust security nets and welfare scheme to the population, due to financial constraints, to the population due to financial constraints. Next, corruption in the form of leakages, corruption in the form of leakages
कॉमा घोस्ट बेनिफिशियरीज, ठीक है। नेक्स्ट, लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लो इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, results in lack of efficient and accessible storage houses, efficient and accessible storage houses and linkages for safe collection and distribution of food ठीक है। ये कुछ है रिसोर्सेस, दिस आर द रीजंस फॉर द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, समझ में। तो ये कुछ है, बाकी एक क्वेश्चंस और, तो इसको आप एक बार घर पे ट्राई करो, ठीक है, ऐसा क्या। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। मैं ये जो बच्चे ऑनलाइन है उनके लिए मैं ये PDF अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है।